Yeah, good morning, all the traders out there. So the holy hangover should be over by now, and markets, as we all know, is एक uncertainty के दौर से गुजर रहा है market. So we as a trader will have to live with this for at least a good period of time. So is my screen visible, everybody? If yes, give me a yes or a no. Is my screen visible? I think now it should be. Yes, the ET trader says yes, Nano ETG, good. So today, before we start, let me read out the disclaimer part. This is for educational and informational purposes only, and it does not constitute any financial advice. After that, let's see what market like has ahead for today. आज है क्या निफ्टी बैंक निफ्टी OI data interpretation. See, OI interpretation will be very fluid right now because market में जो swing है is more than a daily ATR or more than the limited volatility measures. Global indices, sectors and VIX. So as always we start, हम जब भी start करते, let's see what happened around the world when we were asleep. So that way it tells me that uh, you saw a big cut in Dow Jones or S&P, which is the leading indices. Let us go and check the of Holi, and today we are going to start. So that one day of holiday will get adjusted. Let's see whether sharp up or down. It should be down if you ask me. So let the charts, let the data get loaded. So yesterday, if you see Dow Jones, before I went to sleep, it was minus I think 1,000 odd points. So there was a decent recovery from the lows. But ये जो uncertainty है वो prevail करेगी. And the futures right now are 142 points down. Bovespa, which is more of a metal, is down close to 7,000 points और निकाय भी माइनस में चल रहा है. हैंगसेंग भी 400 पॉइंट माइनस में चल रहा है. So you can see that globally markets जो ये event है is sending jitters, nervousness है, and things are in red. Keep that in mind. After that, there are no prominent headlines. अभी सबको पता है the conflict is going on, and the worst part is it will extend. If it extends beyond a month's time, probably there might be trouble in terms of the crude oil supply and all. So chaos to hai, confusion to, there is no confusion, it's pure chaos. There is clarity, this is going to extend. और as a trader, please note it down कि हमें volatility के साथ जीना पड़ेगा थोड़े दिन, which would be gap up, gap down. The global leaders' statements will keep on coming. So I would say keep your trades for particular for a day, get in, get out, and go slow, go in a logical manner. Does it sound okay, everybody? So after that, let's go to the gift nifty. This is the time where, as a trader, you have to be on a this thing. So gift nifty, I am seeing जो हमारा long term channel है. When I say long term channel, I have taken the low of COVID. Right. So from this COVID low, अगर आप देखो तो market is channelized. Why we are calling it as a channelized? Because it's a reverse channel. First, पहले मैंने ये दो high को connect किया, then I drew a parallel. So over here, अगर आप देखो तो market did take support at the lower end of the channel and bounce back. So this is a very important observation. Keep in mind, ये एक medium term structure disturb कर सकता market का. Or again, prices are coming at the lower end of the channel. If this channel breaks, then we might see some sharp dips in the markets, which could be a trending move, which means रुक रुक के नीचे जा सकता है, or it could be a sharp move. Be aware of this. It's a confirmed channel which is going on in our markets, जो कि COVID low से चल रहा है. And once the channel breaks, then we have to accept that we sit on the sidelines. Let's wait for the next move or the next low to be in place. Have you all taken note of this?
I would call it as a long term channel. 2020 से 6 साल का चैनल है. गिव मी अ यस और अ नो. दिस चैनल को आप दिमाग में प्रिंट कर लो. This channel, again I said, print it in your mind. Or if I always say, when you are in the sessions, come with a pen and a paper, or have a trading diary. This is how we are going to make our plans. Daily trader says yes. So that's the macro trend, which is 5 years old. Now let us come to the current price के आसपास आते. So this budget day low has been taken out convincingly. So let's accept it. Pressure is there on the markets, no doubt about it. आफ्टर दैट चलो हम अभी निफ्टी में जाते हैं. देखते हैं आज का मार्केट क्या है. तो थॉट्स एंड परसेप्शन, जो माहौल की बात है, वो गंदा है. दैट इज बैड, दैट इज नेगेटिव, दैट इज sentiments are very very negative. So this budget day low looks might get taken out today. That's what, if we go in as per what happened yesterday. और अभी यहाँ पे आप मार्क करो, ये जब मार्केट ऊपर गया था, there was a gap. When market came down, there was a gap. So अगर gap सामने सामने आ जाते ना, इसको हम island reversal बोलते. Note it down. Such patterns are rare, but when they come, we have to take a note of it. Island reversal is जब ऊपर गया उस टाइम gap था, जब नीचे आया उस टाइम gap था. Previously, if you go to the weekly note, you will find the island over here also. अभी island reversal एक बार बन जाता है ना, then what happens is that high itself acts as a resistance. ये island बना था यहाँ पे, and this high never crossed. So again we have a second island, which is saying there is a tremendous pressure on the markets, and this high 25,400, which is way up. तो अभी ये गैप को लेके चलते. दिस गैप, ये गैप पे एक लाइन डाल दो. जस्ट पुट अ लाइन अराउंड दिस गैप. तो ये कहावत है ना वॉल स्ट्रीट में, किड विद अ रूलर कैन मेक अ मिलियन. मोस्ट ऑफ द टाइम हमें अपने ज्योमेट्रिकल स्टडीज जो बचपन में की थी, वी हैव टू ब्रिंग दैट इनटू ट्रेडिंग राइट नाउ. So these are the two lines. 25,100 is a strong resistance for the markets, and यहाँ पे भी island बना था. A pullback just pushed island towards the island and came back. Same way में again we have island. कुछ भी अच्छा होता है, some pause or a stall or some news flow and all. Or forget that part, we are trading on the price charts. Any pullback now, I don't expect it to go past 25,100. And once this low breaks, let's see the gift nifty में मैंने एक channel दिखा था. Let's see, can we mark the same long term channel on the markets? So if I take COVID low, जो कि 2020 का है, and let me mark a channel. Gift nifty में it was very very distinct. So reverse channel का मतलब क्या है? Let me explain to सबको. रिवर्स चैनल का मतलब है, पहले हम दो हाई ज्वाइन करते थे, अगर लो नहीं मिलते तो, and I'll make some adjustments. I'll take exact high. So first हमने high mark किया. After that, just go over here, click on extend right, settings में extend right line. So now are you getting this channel on Nifty? So possibly the channel support is around 23,800, which is again 1,000 points from the current levels. Now अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं ना, so this channel को आपको दिमाग में डाल के रखना है. Don't ignore this channel. Yeah, Nanavati says very important channel. So this is what I wanted to highlight in today's session. And COVID low, the budget day low looks like it's violated. And violation के साथ यहाँ पे एक पैटर्न बन रही है, इसको हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं. बट दिस स्पाइक कैंसल्स द पैटर्न, तो इसको हम एक रेंज और डबल टॉप भी बोल सकते हैं. सो नाउ मार्केट में देखा गया है, जब भी एक रेंज है और रेंज नीचे के साइड टूटता है, देन वी हैव प्रेशर ऑन द डाउन साइड. सो वंस वी टेक दिस आउट, देन यहाँ तक ये जो गैप है यहाँ पे, so till this gap is the next support level for the markets, which is in the range of 24,200 to 24,23,800. Note it down, friends. Double top, जैसे ये high low टूटेगा, the double top in the market will be confirmed. It's not a head and shoulder जैसे मुझे messages आ रहे हैं. It's a double top.
और यू कैन डबल टॉप इसलिए बोल रहे बिकॉज ये हाई बना बट उसके पहले ये लो बना, सो वी आर टेकिंग दिस हाई एंड दिस हाई। ट्रिपल टॉप बोलना ट्रिपल बोला, जस्ट लेट्स नॉट गो इनटू द एकेडमिक्स पार्ट ऑफ इट, इट्स अ कंसोलिडेशन, एंड कंसोलिडेशन अगर नीचे टूटता है तो एक मार्केट में डायरेक्शन जो है डाउन आ जाता है, एंड अपसाइड पुलबैक का लेवल्स आपको पता है विच इज द गैप। सो एवरीबडी क्लियर ऑन निफ्टी? Get out of the holy mood. We enjoyed a lot, no doubt about it. मेरा तो गला ही खराब है। Daily trader says yes. Now after that, इसके बाद हम बैंक निफ्टी में जाते हैं। बैंक निफ्टी, I was just doing a session yesterday. So if you are not, it will be uploaded today on YouTube or our website. It is on trends. So बैंक निफ्टी अगर आप देखने जाओ तो अभी भी बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू निफ्टी, बट एट द सेम टाइम दिस गैप अभी इमीडिएट में विल कंसिडर इट एज अ सपोर्ट, सो विच इज अराउंड 58,700। सो एंड ये जो ऊपर में गैप बन गया ना यहाँ पे, दैट गैप टेक इट एज अ रेजिस्टेंस। देखिए अभी मार्केट अप डाउन तो करेगा, बट एज अ ट्रेडर यू शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर अबाउट टिल वेयर ऑन द अप, टिल वेयर ऑन द डाउन। एम आई राइट और रॉन्ग फ्रेंड्स? सो दिस इज हाउ बैंक निफ्टी इज। और मार्केट एक हाईली ओवरसोल्ड है, इतना ओवरसोल्ड मार्केट मैंने कभी नहीं देखा कि जो बोलिंगर बैंड के नीचे ही चल रहा पूरे दिन लास्ट, इफ यू से ऑन अ मंडे। सो बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट एवरेजेस है, लेट्स गो एंड चेक द 50। सो अगर 50 दिन का एवरेज हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट्स में, तो दैट 50 डे एवरेज बैंक निफ्टी ने उसके नीचे क्लोज ऑलरेडी दे दिया। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ द एवरेजेस जो आता है आफ्टर मीडियम टर्म, लेट्स टेक 100। 100 वाज फ्राइडे मंडेज लो। सो अभी यहाँ पे जो दो एवरेजेस आपको ध्यान में रखनी है, विच विल बी 100 एंड 200। 200 काफी लो है, इट्स वे डाउन, which is somewhere around this. So as day progresses, possibly 200 मैं 100 को भी निकाल दे रहा हूँ। I would just focus on 200 DMA. Right. So let's see where Bank Nifty comes and hits the 200 DMA. That's where the support lies. And if after that, if further it breaks, then आपको माननी पड़ेगी कि एक लंबा करेक्शन का दौर स्टार्ट हो रहा। When I say लंबा, it's like this, जो कि काफी 2-4 महीने चला था। पीरियोडिकली हमें ये डिक्लाइंस देखने मिल रहे इन दिस अप ट्रेंड, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। एंड अगर मैं इफ यू नाउ आई रिमूव एवरीथिंग, सो दैट इज हाउ द बैंक निफ्टी इज पोजिशन्ड। It's gap to gap. Upside gap is the resistance, downside gap is the support. Let it come here. It might take a halt, pause or a breather. After that, we will see what happened in the markets today. और शाम को फिर हम आज 345 पे मिलेंगे। So that was बैंक निफ्टी। अभी हमें विक्स भी देखना है। So I'll go to इंडिया विक्स। तीन चीज आप अभी इंडिया विक्स को इग्नोर मत करो। देखिए इंडिया विक्स ने, इफ यू ऑल रिमेंबर, हम रोज देखते हैं कि इंडिया विक्स अगर यहाँ तक आया और ब्रेक किया, देन मार्केट में एक नरमी का दौर देखने मिलेगा। देयर माइट बी अ रिएक्शन ऑन द डाउन साइड। सी विक्स एंड मार्केट्स एज आई हैव एक्सप्लेन आर इनवर्सली रिलेटेड। अगर विक्स ऊपर जा रहा है तो मार्केट को नीचे जाना, एज सिंपल एज दैट। इनवर्सली का मतलब है ऑपोजिट। सो विक्स हैज गिवन अ ब्रेकआउट फ्रॉम दिस रेंज एंड विक्स कीपिंग पुशिंग हायर। अगर हम विक्स की रेंज देखते हैं तो ऑन द डाउन साइड, if VIX is the volatility index, अगर VIX यहाँ से लेके ऊपर में, I think let's stop over here, ये रेंज पे आया। If volatility is going to expand and VIX from this breakout is likely to reach here, let's accept that medium term pressure market में रहेगा। How many of you agree? It's not my interpretation. We are all traders and this is our community out there on the YouTube live. I learn from you. I take your inputs. Let's make it more interactive. How many of you think this is correct? Daily trader says yes. Shankar, need your view in KI stock specifics. Shankar, do come in the evening at 3:45. We'll discuss here. We are just planning out for the day. So VIX, if keep on pushing higher, the market pressure is here. Let's say
either we need a cool off on VIX or let it go up till here, market में pressure रहेगा. And VIX अगर आप देखो तो right from July 2020 अगस्त सॉरी 2024 ये एक रेंज में ही है. यहाँ पे टॉप्स बन रहे हैं, यहाँ पे बॉटम्स बन रहे हैं. सो अभी विक्स में भी काफी जगह है ऊपर जाने के लिए. अभी तो जस्ट मंडे को ही ब्रेकआउट दिया एंड वी हैव टू कीप अ नोट ऑफ इट. वॉलेटिलिटी रहेगी. वॉलेटिलिटी जो बोलते हैं वो 25-50-100 पॉइंट की वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी. द वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन इज ऑन अ हायर साइड. जब हम हायर साइड बोलते हैं तो आप एटीआर लेके चलो. ब्रेक ऑफ द एटीआर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड. सो Nanavati ji says very important channel. That's great. Kamlesh ji says agree. So you know all the data points on the markets today. So अभी मैं तीनों चार्ट साइड बाय साइड रखूंगा एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू डेली इफ यू आर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर. कीप योर विक्स. ये आपको एक वॉलेटिलिटी में डायरेक्शन दिखाता. मुझे तो ये लगता अभी और ये स्पाइक करेगा ऊपर 22 तक, जो कि एक मार्केट में नरमी का दौर दिखा रहा है. इज शोइंग देयर विल बी अ प्रेशर ऑन द मार्केट्स इन द शॉर्ट टर्म. मीडियम टर्म में वो जो चैनल है उसको आपको ध्यान में रखना है. सो निफ्टी बजट डे लो के आसपास है. लेट्स सी वेदर इट गैप्स डाउन टुडे एंड कम्स डाउन टुवर्ड्स 24,100, जो कि एक लॉजिकल लेवल लग रहा है. एंड देन साथ में आप बैंक निफ्टी रख लो. कीप बैंक निफ्टी टुगेदर बिकॉज दीज सेशंस आर प्लानिंग आउट द ब्रॉड मार्केट्स. So that is Bank Nifty. So I am aligning all the three charts together for you to get a clarity. And again, we'll meet in the evening at 3:45. So VIX में जो एक था, will this breakout come? It's a convincing breakout. Strong close above this. और विक्स का जो नेक्स्ट अपर एंड ऑफ द रेंज है विच इज वे अप हियर, जो कि हमने देखा विक्स जब वॉलेटिलिटी स्पाइक्स होती है तो विक्स रीचेस 2300. So VIX is going down till there. The pressure on the markets will be here. See, हम bare minimum level से अभी काम कर रहे हैं because we don't know how the extremes will work. And on the Bank Nifty side, so that's how the markets are looking, and that's how the setup are looking from the setup perspective. So intraday, take your own trading decisions, take your own trading views. There might be pullback sharp on the upside and on the downside. So that's how we had planned for the day. So Nifty is there. Yeah, I dropped my microphone. Okay, Bank Nifty we have seen. OI data is right now in this volatility. Will keep on shifting because position shifting काफी strong होगी. We'll check that in the evening at 3:45. Global indices are all in red. VIX is showing that it has given us a breakout and it can go to 22 levels, which will put pressure on the markets. On the sectors, nothing is standing out. Everything is moving as per the markets. अगर कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो मैं पिन पॉइंट कर सकता हूँ इसको डिफेंसिव में लेके बैठ जाओ. तो वी आर ट्रेडर्स. We just trade the high beta sectors. Even if something is defensive, not falling with the markets, then we avoid it. Stocks on the move, everything is on the down move. And let me take you to our Substack note. So this is Trading with Stocko, a Substack. This is what I write on the daily basis. How many of you have got in the habit of reading the Substacks? It's just 2 minutes. See, how we are building our community is we are writing the notes of the Substack. Shop शाम को मैं 6 बजे upload करता हूँ, करीब 7 बजे के आसपास, between 6 and 7. Just read it. बहुत भी ज़्यादा मैं इसमें नहीं देता हूँ, but I cover what matters for a trader for the next 1 to 2 days, which is Nifty, the OI data, the key technicals part, Bank Nifty, and I give 2 to 3 stocks out there. So after Substack, then you come in the morning sessions at 8:45. After that, फिर हम post market में मिलते. So we are part of a community in which we are trying to get a clarity as far as what the price action is doing, what the trend is doing, how the volatility is shaping up, not in just one session which is 10, 15, 20 minutes, but in a very, very well planned structural part. So how many of you have still not registered on Substack? Is absolutely part of our community and be there. Those who have registered, give me a yes. I'm once again putting the link. And plus, if you want, yesterday I did a webinar also, which was on trend, which was classical Dow theory, what we call the primary trend and the secondary trend.
If you have not watched, I'll just give you the link. So make sure we have a plan to follow our journey to become a professional trader in a way that let's be part of a community, let's be part of all the sessions. So trend following, this is what I did yesterday, and this was classical Dow, only price actions. So I'll just put this link. So today is a great day to watch how the trend, कैसे trend up से down change होता है, and that way. So the link I have posted it. So just we did this yesterday based on classical Dow techniques, which is this thing. So back to the markets. This is how market is looking like, and so we are better prepared. Uncertainty will be there, volatility spikes will be high. VIX is showing this breakout. Will take it into 22 levels where the pressure on the market is intact. Intraday volatility will continue. So before I end, let me read out the disclaimer. This is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. So that's all from my side, friends. Thanks and have a nice day. Again, we'll meet in at 3:45 for post market session. Thanks. Bye from my side.